Hello everyone, I'm Dr. Rajpal and you have tuned into Tech. So in this video, the topic for discussion is we need more creators. So creators refers to teachers, educators and creative educators basically. And this article is taken from the Hindu today itself. So now I would be dealing with the issues being raised and addressed in this article. But prior to that, I would be sharing the key question of this article. That is, विकिपीडिया ने प्री सेवा बीएड शिक्षकों की विषय वस्तु को डिलीट क्यों किया? सो वो उनकी विषय वस्तु क्या है? What is that content which has been deleted by Wikipedia, and on what ground that particular content has been deleted by the neutral editors of Wikipedia. Wikipedia के निष्पक्ष एडिटर्स ने कौन सी विषय वस्तु को डिलीट किया और क्यों किया? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस जो मैं इस डिस्कशन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं और जिन पॉइंट्स को मैं एड्रेस करने वाला हूं वो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर full view में, and this would make your listening a guided one. जिस प्रकार से आप एक चैप्टर को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ के चैप्टर को पढ़ते हो तो जिस प्रकार से आपकी जो रीडिंग है वो गाइडेड रीडिंग हो जाती है, and that becomes an inquiry into the topic. This way these questions would help you to understand the article. So, which are the fundamental skills to develop creators in 21st century? 21st century में, 21st century is not mentioned in the question, but that's the exact context. 21st century में कौन सी ऐसी fundamental skills हैं जो creator के development के लिए, उसके विकास के लिए जरूरी हैं? मतलब एक creative teacher के development के लिए कौन सी ऐसी fundamental skills हैं जो परम आवश्यक हैं? What does creation require? And this whole idea of creation is dependent on what? Creation जो रचनात्मकता है उसके लिए क्या आवश्यक है? Does our current classroom and content heavy syllabus enable deep work? और जिस प्रकार से हमारा भारी भरकम सिलेबस होता है और जो जिस प्रकार का हमारा वर्तमान का क्लासरूम है, क्या वो डीप वर्क के लिए हमें इनेबल करता है, हमें योग्य बनाता है? How does we retain teachers, retrain teachers who have been trained in traditional systems? जिस प्रकार के ट्रेडिशनल सिस्टम्स में टीचर्स ट्रेन हुए हैं उनको हम किस प्रकार से रीट्रेन करें? How ready are our future educators? और हमारे भविष्य के एजुकेटर्स कितने तैयार हैं, कितने सशक्त हैं? ये क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ why the neutral Wikipedia editors deleted the content created by pre-service B.Ed teachers. Pre-service B.Ed teachers के द्वारा तैयार किए हुए कंटेंट को विकिपीडिया के न्यूट्रल एडिटर्स ने डिलीट क्यों किया? ये आपका की क्वेश्चन है, and this is a nagging question rather, because this would help us to understand that what is the level of our teachers, what is the level of B.Ed. और इसीलिए जो सेकंड क्वेश्चन जो आपने थंबनेल में भी देखा है और इस वीडियो का जो सब थीम हम कह सकते हैं वो है B.Ed, इज इट बैचलर ऑफ एजुकेशन और बेसलेस एजुकेशन? इस प्रकार के हालात हैं, उसमें क्या B.Ed बेसलेस हो गई है? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Why the feedback from Wikipedia editors was crucial? विकिपीडिया के एडिटर्स के द्वारा दिया हुआ फीडबैक किस लिए आवश्यक है? In which ways technology tools are impinging on individuals? जो टेक्निकल टूल्स हैं वो किस प्रकार से व्यक्ति विशेष पर दबाव बना रहे हैं और किस प्रकार से उसको परेशान कर रहे हैं या किस प्रकार से उसका हनन कर रहे हैं, किस प्रकार से उसके विकास को बाधित कर रहे हैं? How hard the technology has hit the children during lockdown? और टेक्नोलॉजी ने कितनी जोर की जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कितने जोर से प्रहार किया है
बच्चों पर लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी ने बच्चों पर किस कदर प्रहार किया है, वो भी एक बड़ा कंसर्निंग क्वेश्चन है। पेरेंट्स का भी क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी से बच्चों को किस प्रकार से बचाएं, बच्चे अपने आप को टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से बचाएं, क्योंकि वो जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग है उसमें बच्चा अपने आप को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करता है, और जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके करियर के लिए जो मेहनत उसको करनी चाहिए होती है, उस मेहनत की बजाय बच्चा सारा टाइम ऑनलाइन गेम्स और दूसरी प्रकार की जो इंटरटेनिंग एडिक्टिव स्टफ है उसमें जाया कर देता है। तो उन सब से भी किस प्रकार से हम बच्चों को बचा सकते हैं, इस कंसर्न को भी एड्रेस करने की मैं कोशिश करूंगा। हालांकि वीडियो बड़ा संक्षिप्त है और इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, but still I would try my level the best to touch upon and to discuss in brief on all these issues. So many immersive distractions from deep work, is it even possible to develop creators? So जब इतने immersive distractions हैं तो क्या हम creators को develop कर सकते हैं, और can technology replace human engagement and emotions? क्या टेक्नोलॉजी ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन एंगेजमेंट को रिप्लेस कर सकता है? ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, why this article or on which premises this article is based on. So the context is New Education Policy 2020, NEP 2020, नई शिक्षा नीति 2020 अभी अनफोल्ड हो रही है। तो उसमें हमें कौन से ऐसे आयाम हैं शिक्षा के जिन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा गया है। एंड सबसे पहले टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, that what are the fundamental requirements or what are the fundamental skills for creating or for developing educators. So in that in those fundamental skills we include critical thinking and problem solving. सबसे पहले जो स्किल है जिसको हम इंक्लूड करते हैं that is critical thinking, समीक्षात्मक सोच और problem solving, how to solve the problems. And then comes communication and collaboration, how we work in collaboration and communication skills. Then we include creativity and innovation. Creativity और innovation की जो skill है, innovative mind, आपका संरचनात्मक आपकी approach हो, that is also a skill along with your creativity. Then comes flexibility and adaptability. आप rigid ना हो, आप elasticity आपके व्यवहार में बनी रहे, आपकी approach में elasticity बनी रहे, और आप जिस प्रकार की सिचुएशन हो उसके अंदर अपने आप को अडेप्ट भी कर पाएं। इनिशिएटिव्स एंड सेल्फ डायरेक्शन, किस प्रकार से आप पहल कदमी करते हैं और अपने आप को सेल्फ डायरेक्शन किस प्रकार से अपने आप को दिशा देते हैं, दैट ह्यूजली impact that has a huge impact on the kind of life that you live. Then comes social and cross cultural interactions, सामाजिक और कल्चर्स के अक्रॉस जो संवाद है, इंटरेक्शन है, वो भी एक स्किल है। Suppose you are a North Indian and you are meeting a South Indian, so how you interact with that particular cross cultural community, that is also a skill. Particularly this skill is much more required in the global times when everything has turned global. सारी चीजें जो वैश्विक हो रही हैं largely because of this screen through which I am connecting to you, and so that has condensed the space. The only space is cyberspace. Then comes productivity and accountability. जिम्मेदारी और productivity भी अपने आप में skill है, and all these skills strengthen an individual's ability to contribute the maximum at the workplace. Workplace पे ये सारी skills एक व्यक्ति को enable करती हैं कि वो अपना best contribute कर सके. So relying on traditional literacy and numeracy alone will not suffice, and tends to
marginalized, differently abled learners. So in the changing times, the traditional literacy and numeracy is not going to suffice. We need to upgrade ourselves as teachers. हमें टीचर्स के रूप में अपने आप को अपग्रेड करना होगा, और ये स्किल्स जो अभी मैंने आपसे फंडामेंटल स्किल्स के रूप में डिस्कस की हैं, इन स्किल्स पे हमें काम करना होगा। महज इन स्किल्स का नाम सुनने मात्र से और इनके व्याख्यान के जरिए हम इन चीजों को नहीं कर सकते, बिकॉज प्रीचिंग इज वेरी इजी, प्रैक्टिसिंग इज समथिंग that is challenging, and there we lack as teachers. So हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करते हुए इन सब चीजों पे फोकस करना होगा, so that we are upgraded teachers of 21st century. Next question that comes is what requires for a creative creation. संरचनात्मक क्रिएशन के लिए किस चीज की आवश्यकता है? संरचनात्मक क्रिएशन के लिए डीप वर्क की आवश्यकता है, वर्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है, और जो डीप वर्क है उसके लिए जिस प्रकार का हमारा वातावरण है, जिसमें हैवी सिलेबस है, क्लासरूम के अंदर सारा फोकस केवल एग्जाम पे आधारित होता है, उस प्रकार के परिवेश में in a situation in a classroom where every activity is designed keeping in mind the examination, in such conditions we cannot allow our students to go for deep work. For deep work to take place, it is necessary on the part of the educator, it is necessary on the part of the teacher that 2 or 3 weeks should be given to a child or a student to connect the coursework to society, कि वो जो पढ़ने वाला है उसका उसके आम जीवन में, आम समाज में उन सब चीजों का क्या महत्व है, और वो चीजें जीवन से और समाज से किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। अगर ये चीज हम अपने बच्चों को अलाउ कर पाएंगे, then they would be able to be a good citizens, and then they would be good learners. So creativity के लिए जब तक आप क्लासरूम को क्लासरूम तक रखेंगे, स्कूल को स्कूल तक रखेंगे, और स्कूल का और समाज की जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, क्रिएटिविटी और डीप वर्क इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो हाउ रेडी आर फ्यूचर एजुकेटर्स? हमारे भविष्य के जो शिक्षक हैं वो कितने सशक्त रहेंगे, कितने तैयार हैं इन सब चैलेंजेस को मीट करने के लिए, उसका एक बड़ा एक जिसको हम कह सकते हैं कि oblique picture is being created in this particular title question, जिसको मैंने कहा कि why the neutral Wikipedia editors have deleted the content prepared by pre-service B.Ed teachers. Pre-service B.Ed teachers, pre-सेवा B.Ed teachers के द्वारा तैयार किए हुए कंटेंट को विकिपीडिया के निष्पक्ष एडिटर्स ने डिलीट क्यों किया? इस क्वेश्चन के आंसर में आप जान पाएंगे कि हमारी बीएड की जो कंडीशन है, जो बीएड का हमारा कोर्स वर्क है, उसकी स्थिति कैसी है। आप में से जिन सभी ने बीएड किया है, सो इट इज नॉट दैट ऑल ऑफ यू और all the people who have done B.Ed have done it without putting serious efforts. I accept that there are people who have done well, who have put in their best efforts, but the majority of the students and the majority of this whole B.Ed infrastructure as a system is very lethargic. It is suffering from academic lethargy. B.Ed का जो पूरा कोर्स है, I'm very sorry to say this, that this course, the whole infrastructure, the whole academic logistics associated with B.Ed is very lethargic, and that's why total 65 pre-service B.Ed teachers were asked to prepare content for Wikipedia page pertaining to educational concepts. Educational concepts को लेकर 65 pre-service B.Ed teachers को कंटेंट तैयार करने के लिए कहा गया, और उन्होंने जो कंटेंट तैयार करके विकिपीडिया पे अपलोड किया, उस कंटेंट को विकिपीडिया के न्यूट्रल एडिटर्स ने डिलीट कर दिया, और उनको पता भी नहीं था
कि ये प्री सर्विस बीएड टीचर्स के द्वारा अपलोड किया गया है, तो फिर वो डिलीट क्यों किया गया? अब क्वेश्चन ये है. So that was deleted because of several reasons. Number one, the content was plagiarized. There was plagiarism in the content. जो कंटेंट था वो कट कॉपी पेस्ट था. मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स का उसमें जो कंटेंट था वो प्लेजराइज था, कट कॉपी पेस्ट था, एंड इट वाज हैविंग सीरियस ग्रामेटिकल एंड कंपोजिशनल एरर्स. उसमें जो ग्लेरिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी वो थी, इसीलिए विकिपीडिया के एडिटर्स ने उसको डिलीट कर दिया. और इस बात से दिस पैरामीटर हेल्प्स अस टू स्केल where our beard stands today. What are the academic parameters? This can be seen as a parameter to map out, to scale up the level of our pre-service beard teachers who are going to be teachers in future. So we need to take this point very seriously, and certainly remedial steps should be taken. And one of the remedial steps, as being suggested by an educator and a friend of mine who is too much into these analysis, he says, and he is of the firm opinion that should be the remedial step should be 4-year integrated rigorous course for beard. Enhancing the length or the duration of the course would not only be sufficient enough to improve the falling standards of beard, but we need to make it rigorous. The activities which are designed in the syllabus, those activities needs to be executed in the classroom and in the open field. That is the requirement for that. और दूसरा, why this feedback from Wikipedia editors is crucial. Wikipedia के editors के द्वारा ये जो feedback दिया गया, ये महत्वपूर्ण किस लिए है? So the critical feedback from various Wikipedia editors was crucial. ये महत्वपूर्ण इस sense में है because it is unbiased. This feedback forced the learners to re-evaluate their skills. और इस feedback ने learners को अपनी skills को re-evaluate करने के लिए मजबूर किया, उनको inspire किया, हम कह सकते हैं. This shows that constant engagement and emotional connect and immersive learning are important part of education. So emotional connect और निरंतर संबंध, constant engagement and emotional connect along with immersive learning are the parts of education. Then I would be taking up a very significant question, that is how technology has impinged on individuals. So over-reliance on technology comes at a cost, and we are overtly dependent on technology in these contemporary times. आज के समय में हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और जिस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उसकी हमें एक कॉस्ट, एक लागत, एक मूल्य अदा करना होता है. And we are paying the cost. We are paying for that. We are paying for that over-reliance on technology. And technology tools are forcing human beings to remain consumers rather than become creators. टेक्नोलॉजी टूल्स पे जितना हम डिपेंड करते हैं उससे we become consumers. हम उपभोक्ता बन जाते हैं, उनकी कमोडिटीज का कंजम्पशन करने के लिए उपभोक्ता बन जाते हैं, क्रिएटर नहीं बन पाते. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल take up social media monster, for example, in this concentration. And in social media, whenever we are on any social media platform, we are forced to scroll mindlessly rather than contemplate or engage meaningfully. आपने Facebook पेज निकाला, you keep scrolling mindlessly and it consumes all the time. You visit Instagram, you keep scrolling, and there is no space for time, or there is no time for you to stop and contemplate. There is no time to stop and reflect. आप रुकें और उस पे मंथन करें, इतना आपके पास में समय नहीं होगा. एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा
कि WhatsApp स्टेटस आप देखना चाहेंगे. Suppose somebody is sharing something, so you don't see what that person has seen. Might not be worthy watching it. ये जरूरी भी नहीं कि अगले ने जो लगाया उसको देखना जरूरी है, बट स्टिल आप अगर कोई लिंक भी दिया हुआ तो लिंक को देखेंगे और फिर चले जाएंगे. पर्टिकुलरली मैं वीडियो लिंक आपसे शेयर करता हूँ. सो व्हाट्सएप पे वीडियोस के लिंक मैं शेयर करता हूँ, तो उसमें व्यूज मिलेंगे आपके सीन लगभग 300 plus people would be watching a particular link, but when I see how many views on this video, that would be less than 50. So that at times gives me a sort of insight to contemplate on it. So this is not a grudge, but this gave me first-hand experience of how fast we have become and how deep this mindless scrolling as a habit has penetrated into our life. ये mindless scrolling की जो habit है, ये हमारे अंदर कितनी चली गई है, ये मैं इस उदाहरण से समझ पाया और आपसे शेयर भी किया. So we need to have sustained attention. सबसे जरूरी चीज है जिसको हमें अपने जीवन में, अपने जीवन मूल्यों में सम्मिलित करने की जरूरत है, वो है sustained attention. हमारा attention focus नहीं है. We keep jumping from one thing to another, and that way we are the monkeys of modern times, rather post-modern times, right? So next, I will be taking up the second last question of this video, and we are concluding this video very soon. So how hard the technology has hit the children during lockdown? So lockdown में technology ने बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित किया है, उस चीज का example आप बड़े practical level पे देख रहे हैं that owing to pandemic shutting down of schools, children have lost all personal contact with their social group. बच्चों के जो social groups थे उनमें से सारे contact उनके खत्म हो गए हैं, and they are forced to rely upon technology to provide their, and we as parents are forced to depend upon technology to provide our children constant gratification to keep them engaged. उनको लगातार engage रखने के लिए we allow them to go with technology. So उस टेक्नोलॉजी में वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग की हैबिट है, वो उनमें पहले से ही डेवलप हो जाती है. सो फाइनली टेकिंग अप दिस डिस्कशन ऑन कि ये जितने इमर्सिव डिस्ट्रैक्शंस हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स के जो इमर्सिव डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या इसके अंदर इस प्रकार के माहौल में हम कैन वी डेवलप द क्रिएटर्स, कैन वी डेवलप द एजुकेटर्स, कैन वी डेवलप creative teachers, and the last question, can the technology replace emotional and social engagement? So the disruptive nature of digital tools has thrown up interesting challenges to traditional education system. जो traditional परंपरागत education system है, उसके लिए disruptive nature जो digital tools की है, उसने सीरियस चैलेंजेस पोज किए हैं, सीरियस चैलेंजेस उसके सामने खड़े किए हैं, एंड एजुकेटर्स विल हैव टू फाइंड वेज टू अपग्रेड, टू अपस्किल देयर एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज विद इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी इनटू देयर अप्रोच थ्रू हाइब्रिड लर्निंग. सो हाइब्रिड लर्निंग के तहत टीचर्स को अपनी एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर टेक्नोलॉजी को बड़ा माइंडफुली we have to include that. So teachers are supposed to be techno savvy. एक तो टीचर्स को टेक्नो सेवी होना पड़ेगा, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है उसको बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ में बिहेविंग वेरी प्रूडेंटली, दे हैव टू अपग्रेड themselves by incorporating those technologies into their method, into their pedagogy, and at the same time they have to work upon the fundamental skills which I discussed while responding to the first question of the video. I hope you must have enjoyed this video. If you have not subscribed the channel, kindly do subscribe, and if you find this video worth sharing with your friends, please do that and promote that. Thank you for watching this video. Thank you so much.